I dreamt of a beautiful kitchen and I just got it. प्रत्येकाच्या आपल्या किचन विषयी विविध कल्पना असतात. त्याचप्रमाणे माझ्या बायकोच्याही होत्या, आईच्या होत्या आणि तसंच माझ्याही होत्या. हर मॉल में देखती थी, सब जगह देखती थी, तो मेरी एक कल्पना थी कि मेरा किचन वैसे. मेरा ड्रीम था कि मेरा किचन बड़ा हो और उसमें सब सामान एक जगह मिले, इकट्ठा मिले. माझं फ्लॅटच्या साईजनुसार माझ्या किचनची साईज थोडी कमी होती. त्यामुळे त्यातल्या त्यात त्या कमी जागेचा वापर जास्तीत जास्त कसं करता येईल हा माझा मेन उद्देश होता. जेव्हा मिस्टर किचनकडे गेलो तेव्हा त्यांनी एक वेगळ्या प्रकारचे किचनचे मॉडेल्स मला दाखवले, ज्याच्यामध्ये कमीत कमी जागेत सुद्धा एक चांगल्या प्रकारचं किचन किंवा त्यातल्या त्यात जास्तीत जास्त त्याचा वापर कसा करता येईल असं त्यांनी मॉडेल्स मला सुचवले. मैं मिस्टर किचन के पास पहुंची. मैंने उनको पहले बताया कि मेरा क्या है, कि मुझे किचन किस तरह से चाहिए. फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे डिज़ाइंस कंप्यूटर पे भी और बाद में डिज़ाइंस भी निकाल के बताए. मुझे जो चाहिए था वो उनको मैं भी बताती गई कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने वैसे उस तरह से मुझे डिज़ाइन निकाल के देते ही जैसा ड्रीम था मेरा वैसे किचन तैयार हो गया. मैंने किचन के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया था. कहीं जगह जाकर मैंने किचन्स देखे थे, मॉड्यूलर किचन्स देखे थे और कारपेंटर वर्क भी देखा था जो मेरे पुराने घर में था. तो मुझे वो फील नहीं आ रहा था जो मुझे बंगले में चाहिए था, मेरे अपने इसमें चाहिए था. पर जो मिस्टर किचन ने जो हमें 3D इफ़ेक्ट्स दिखाए जो कारपेंटर नहीं दिखा सकते, तो वो इफ़ेक्ट से मुझे काफ़ी इम्प्रेस हुई. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मेरे पुराने किचन से मुझे मिला है कि उसकी जो एजेस होती है वो हर्ट करती है. पानी की वजह से बबल्स आते हैं लैमिनेशन को, वो निकल जाता है. और मिस्टर किचन के जो किचन्स बनते हैं मॉड्यूलर किचन्स वो हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनते हैं, मशीनरी से बनते हैं, जो में प्रॉब्लम्स वो नहीं क्रिएट होते हैं. तो मेरा मेन प्रॉब्लम यही था कि मुझे ये प्रॉब्लम्स जो पुराने किचन्स में थे ये नहीं चाहिए थे और यही देख के मैंने मिस्टर किचन को चॉइस किया. This kitchen made by Mr. Kitchen is completely different from those conventional carpentry kitchen. This is factory made and you can see it has got that tussleness and strength. So when we can say it's long lasting, right? It has got good salon features like you can say elegant and sober look, easy to use, easy accessibility. Again you can say easy cleaning, maintenance free, and simply I can say that it has made my cooking place the perfect one. रोलिंग शटर्स असतील, विकर बास्केट्स असतील, नंतर आपले सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉअर्स असतील, ह्या प्रकारचे म्हणजे जे माझ्या डोक्यातही नव्हते. मला त्यांना आयडियाज देताना नीट सांगता येत नव्हतं, पण त्या तोडक्या शब्दात त्यांनी काय समजलं मला माहिती नाही, पण त्यांनी चांगल्यात चांगले सजेशन्स मला त्यांनी सांगितले आणि त्यानुसार त्यांनी करून दाखवलं ते. It has also provided me different salon features like the sitting katta, which makes me feel so comfortable so that I can cook while sitting itself. Then the second thing is the breakfast table. I never thought about having a breakfast table right in my kitchen there, but it has made me so easy to serve and all. So it's quite friendly, user friendly you can say. The grinder unit, it has got the sliders so that I can just pull it off while using it and just keep it off again in order to hide it back in the rolling shutter over there. मुझे कहीं पे बास्केट नहीं चाहिए थी, मुझे कहीं पे ट्रेस चाहिए थे. जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि जहाँ पे ट्रे चाहिए थे उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट्स वैसे पूरी की. मुझे जो फीचर्स चाहिए थे, कहीं पे मुझे डब्बे वगैरह रखने के लिए मुझे सिर्फ ट्रे चाहिए थे, कहीं पे गीले बर्तन के लिए स्टील के रस्ट फ्री ट्रॉलीज चाहिए थी, वो उन्होंने दे. ये मेरे फीचर्स थे जो उन्होंने पूरे किए. क्रॉकरी का भी उन्होंने सेक्शन अलग करके दिया है, स्टोरेज का अलग करके दिया है, डेली जो बर्तन लगते हैं उसके भी अलग अलग ड्रॉवर्स, ये काफ़ी यानी बॉटल पुल आउट ये ऐसे अलग अलग करके दिए. बाकी के भी आम तौर की छोटी मोटी भी चीज़ें रहती है वो सब उसमें बैठ जाती है. बड़े भी चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे काफ़ी स्पेसेस करके दी हुई है.
is one thing which requires a lot of detailing. Detailing is, I mean, the minute of stuffs are required to be taken care when it comes to kitchen. So the best concept that has come in the market today is the modular kitchen, which is being made outside, what does not need efforts on site. Nowadays, clients are more conscious, they have more exposure. In fact, usually you will find people traveling abroad or shifting from abroad to India. So you will find that most of the clients are very much quality conscious. They believe in German theory. So I feel like, supposing if we take Mr. Kitchen as an example, so their competence lies in the quality, the design, as well as the expertise and execution. Mr. Kitchen is one person who would, one company who would make your things so easier as an interior designer, as an architect, as a client too. They have the solution for everything that you give them. What they do is they read your requirements first, they note down those, and they would give you the right product which is required. They would never want you to push in the product just because they want to increase their sales in their company. Secondly, it's like not only they get into the functional aspect about designing your entire kitchen, they would also give you options on how your kitchen would look good in your entire project. They would want to study the entire theme of your project, they would want to relate your kitchen to the entire theme, and they would give you an end result which actually gels in with your entire project very well. So being an architect, what we would like to focus is ultimately the end result, what we are expecting. So taking Mr. Kitchen as a partner for that kitchen niche area, through which we expect that whatever small detailing, maybe it can be a size of your utensil or maybe the dabbas, whatever. So those small integrities may be taken care by your partner, and you particularly yourself focus on the end result and the overall aesthetics, what as an architect we would expect. And my experience with Mr. Kitchen was like, once we have awarded the work, we are rest assured about the end result. So that is the best part what we found being associated with Mr. Kitchen. If a client is wanting to approach Mr. Kitchen directly as an end user, and if it's only the kitchen that they want to make, they do not need an architect and an interior designer. They have the designers in their company, they would do the rest of the job. But one more thing that I would put it in limelight is, they would justify the money that you would put into your product. So it's about justification to the thing that you're going to spend on. And I'm sure you're going to be happy not for a year or two, you're going to be happy till the time you're going to use the kitchen. That's because they have an amazing backup service team which comes at a regular intervals to your place to check up with your, the servicing part also, what generally you require for the mechanisms that are there in the kitchen. And for the architects and interior designers, put your creativity and your thoughts and your minds in different areas of your project and leave the kitchen to Mr. Kitchen. You can just opt for this modular kitchen because it's quite easy to shift from one place to another, even if I want to change my place. So I can just carry this kitchen along and place it over there. So I would just like to say that I'm completely happy with Mr. Kitchen, and I'll ask my friends just go for Mr. Kitchen. किसी को भी मॉड्यूलर किचन बनवाना है तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है मिस्टर किचन। पूरा रेडीमेड किचन ही मेरा 2 दिन में फिट हो गया, इसलिए मिस्टर किचन से मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, और एक गृहिणी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मॉड्युलर किचनसाठी कुणीही मिस्टर किचन हा ब्रँडच प्रेफर का करावा असं जर मला कोणी विचारलं तर त्यांच्या अप्रतिम डिझाईन्स, उत्कृष्ट टीमवर्क आणि प्रोफेशनलिझम तर हॅट्स ऑफ। त्यांनी सगळ्या रिक्वायरमेंट्स माझ्या पूर्ण केल्या। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ मिस्टर किचन विच आय लाईक मोर। मिस्टर किचन युनिक, ब्युटिफुल, कोणालाही मॉड्युलर किचन करायचं असेल तर फक्त मिस्टर किचन। My wife says that now I can cook Maggi in 2 minutes. I can have tea and make tea for her and my family members. This is all because now I know where all the ingredients and other things are kept in my kitchen. Thanks to Mr. Kitchen, it has made my wife happier, indirectly me as well. As a husband, just ensure that कि आप आपके बीवी को किचन दे दो और मिस्टर किचन को पैसा दे दो। It's complete पैसा वसूल package. It is one time a good job done. So they are the best in class.
आता माझं किचन बघितलं तर मला असं वाटतं की माझ्या स्वप्नातलं किचन प्रत्यक्षात उतरलं आहे आणि त्याची युटिलिटी खूप चांगली आहे आणि म्हणून माझं अगदी स्ट्रॉंग रेकमेंडेशन असेल की तुम्हाला जर किचन बनवायचं असेल तर तुम्ही मिस्टर किचनकडनंच बनवून घ्या. Your husband will start helping you with kitchen work if you have Mr. Kitchen. Go for Mr. Kitchen. Good kitchen, happy family. Good kitchen, happy family. Good kitchen, happy family. Good kitchen, happy families. Good kitchen, happy family. Good kitchen and very happy family. Good kitchen, happy family. And I'm sure when you have the product on site, you would say, good kitchen, happy family.